श्री निम्बार्क पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया और उन्होंने संकेत किया कि महर्षियों के द्वारा और निम्बार्काचार्य जी महाराज के द्वारा प्रतिपादित जो द्वैताद्वैत सिद्धांत है, जिसमें उपासना भी है, जिसमें समर्पण भी है और जिसमें ज्ञान की निष्ठा भी है, वह हम अपने जीवन में उतारें। और यदि ऐसा आप करते हैं तो आपका जो जीवन है, जिसको हम व्यावहारिक जीवन बोलते हैं, यह जीवन भी अभ्युदय, समृद्धि, ऐश्वर्य, उन्नति आदि से संपन्न होगा। और साथ ही आपने एक बात और संकेत की, और उस बात का हमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हम भी जब इन पवित्र स्थानों पर जाते हैं तो वहाँ की पवित्रता, वहाँ की शुचिता, इन सब चीज़ों का हम भी ध्यान रखें। क्योंकि हम जिस समय वहाँ जाते हैं, मैं क्षमा चाहूँगा आप सबसे, मैं कल की ही बात देख रहा था और सुबह महाराज श्री ने एक बात संकेत की कि हम लोग चाय भी पीते हैं और चाय पीने के बाद जो पात्र है उसको यहीं देवस्थान के बाहर ही फेंक देते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, और ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आपने सुना कि निम्बार्काचार्य जी का जो पूर्व नाम था वो क्या था? नियमानंद। नियमानंद का मतलब यह है, जब तक आप अपने आप को नियमों में बांधते नहीं हैं तब तक आप उस सिद्धांत को अपने जीवन में नहीं उतार सकते जो आध्यात्मिक है और जिसके बिना आपको अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। अब मैं आगे का कार्यक्रम जैसा आपके समक्ष आएगा, मैं प्रार्थना करता हूँ श्री पालनी जी महाराज के चरणों में कि वे इस कार्यक्रम को आगे प्रारूप दें। श्री पालनी जी महाराज। Sahana vavatu, sahanau bhunaktu, sahaviryam karavavahai, tejasvinavaditamastu ma vidvisha vahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. We fall first at the feet of our beloved Satguru, Sivaya Subramanya Swami, who was the founder of Hinduism Today and the Saiva Siddhanta Yoga order, who established the Kwai Adinam that was spoken of earlier, who trained an order of Swamis to take the monistic theism, which is very similar to Nimbarkacharya philosophy, to the West, and then who ordained as his successor Bodhinathan Velan Swami. And we fall at the feet also of our wonderful Jagat Guru, Shri Ji Maharaj Ji and Shri Gopal Sharan Ji, and all of you today. I woke up this morning at 3:30 to the sweet sound of peacocks calling. So apparently there's 20 or 30 peacocks living in the trees here. It was a very sweet way to wake up in the morning. And then we went on a walk around these beautiful gardens. There was no plan of what we would find on our walk. We were just exploring this beautiful holy ground. And suddenly we were at a little Sivalingam. I won't say a little Sivalingam, it's a very big Sivalingam, where Guruji was worshiping Shiva. And together we all worshipped Shiva this morning. Then we moved, and together we all worshipped Krishna and Radha together. And then we moved, and together we all sat and did Abhishekam and worshipped Nimbarkacharya.
And I thought, what a marvelous example we are. Two orders, a Vaishnava order, a Saiva order, worshiping together in a genuine, sweet, wholesome way. And wouldn't it be wonderful if all sampradayas could come to such an accommodation that's allowed here in this space? It's allowed here because of Nimbark Acharya and what he taught. Because what he taught was all embracing a brotherhood that has no exceptions to it. You know, the Nimbarka Sampradaya is not that well known. It hasn't come into the limelight as some others have over the years, though I think that's changing. I do believe that's changing. But if you ask someone, what is this lineage? They'll say, this is a lineage of prema. This is a lineage of love. Love. First, love of Radha and Krishna, that divine love. Then love of the jiva for God, love of humanity toward the divine, devotional love, which Nimbarka himself said all of our sadhanas, all of our practices, all of our inner work leads to prapati, to pure devotion, perfect surrender. Perfect surrender. Everything leads to that. And then the third love is the love that gives the nature her life, love that flows through the trees and through the beings and through the Bhuttas and through all of the animals and all of the plants of the world. That too is a love. And those three loves are really the defining existence, as I understand it from my distance, of the Nimbarka Sampradaya. And I think that's such a beautiful summation of what's possible spiritually. I'm the editor of a magazine called Hinduism Today. For 32 years I've been doing that. And in America, from that point of view, we kind of look at things differently than you might have the perception here in India. We look at things rather globally. And we see Hinduism in all of its manifestations around the world, and we monitor them also. We kind of make the press behave itself, let's say. So if the BBC puts up a really bad picture one day on their website of something that doesn't appropriately represent Hinduism, we call them up and we make them change that. It's something that we do. And we're watching the changes of Hinduism in our country also. Now, our country, Hinduism, is something not new, because the transcendental philosophers in the mid-1800s knew of Hinduism, studied Hinduism, and embraced Hinduism, but they were a rare few, and it wasn't widely known. And then along came Gandhi, and America became aware of Hinduism through Gandhi and through his example and through what he accomplished and what he believed. And in fact, he was the person of the year on the cover of Time magazine in 1931. In those days, there wasn't much of a Hindu presence in my country, really, but that's changing now. And to give you an example of how that's changed, I'll mention a couple of things. First of all, Diwali was celebrated in 2009 in the White House. Barack Obama, our president, celebrated Diwali in the United States White House for the first time in history. By the way, one time a journalist was interviewing Barack Obama,
And journalists are always looking for something new to give to the public. And so he asked Barack Obama, would you take out everything out of your pockets and show me what you carry around all day? So Barack Obama reached into his pockets and pulled out everything that was in his pockets, his keys and his wallet and I don't know what else. But in the midst of all of those things that he brought out of his pocket was a little Hanuman. He carries a Hanuman with him everywhere he goes. Isn't that interesting? Then last year, to our amazement, Newsweek magazine had an article by a lady, a wonderful lady. Lisa Miller is her name. And she wrote an article called, "We Are All Hindus Now." In my country, this is almost heretical, that she would write an article, the headline is, by we she means Americans. We are all Hindus now. And she went on to explain what that meant to her. She said, you know, in America, 33% of us cremate our dead. And in America, 24% of us practice yoga, and 65% of us believe that any path can lead to God. 65%. She said more and more and more, we're adopting the tolerance and the openness and the genuine love of all paths, which was not always so in my country, and still is not perfectly so in my country. But more and more, Lisa said, we are becoming like the Hindus in our way of looking at religion, and our way of looking at salvation, our way of looking at spiritual practice. This was a monumental milestone in my country, that people that they would allow her even to write that piece and publish that piece. It was quite remarkable. So things are changing. Oh, and when Barack Obama came to your country just recently, just a few weeks ago, right? A couple of weeks ago. So his wife went shopping. Wives will always go shopping when they're somewhere. And what she bought was, she bought Ganeshas for her two daughters. So she stopped and bought the Ganeshas. So those Ganeshas have now gone back to the White House to be in the bedrooms of the two little girls, I suppose. So at Hinduism Today, we're watching all of these trends, and it's kind of amazing us in a way, but it's unexpected in another way, because, why? Because in my country, all of the genius for hundreds of years, not that many hundreds of years, all of the bright young minds went into science and went into technology and went into medicine and all of that. Whereas in India, all of the greatest minds went into the spiritual work, went into philosophy, went into understanding consciousness, awareness, divineness of man. And so we're kind of the geniuses of the outer mind, and here you're the geniuses of the inner mind. And so we make a nice team. Together we can do some wonderful things, and we're in a sense a symbol of that, just sitting here. We're from the West, but I'm here with my iPad, and we're here with the East, and we're feeling very much a oneness together. Hinduism Today, for about 20 years, has given a special award. Every year we look out at what's happening in the Hindu world, and we honor one person with what we call a Renaissance Award. It's a Hindu of the Year award. And when we looked around in 2009, we saw this man, and we studied his work, and we discovered what amazing things he's doing. He's taking this Nimbarka Sampradaya,
which isn't even, as I said, in the limelight in India, and he's bringing it to my world. He's bringing it to Europe, he's bringing it to America, and it's not an easy thing to do. This is not an easy task. We know that Nimbarka himself did sadhanas and tapas and ate, I think, a mouthful of neem juice every day or something like that, lived a very austere time. But Gopal Sharan Devacharya has a similar sadhana. I would say it's a more difficult sadhana, if that's not heresy to say, because he could live in this garden and be at home and happy and fulfilled in this garden. But he doesn't. He travels all the time. He reaches out. He works. He's building temples. Imagine, I've got a mala here, and on my mala is 108 beads. He wants to build a temple for 108 beads like this, one for each one. So far we have 72, is it? So far we've built 72 temples. And I hope you'll all get together and help him build the rest of those 108 temples. We'd like to help too if we can. So we gave him that award, and we asked Rajiv, our correspondent here in North India, to go and interview for an article that we wanted to do. And ultimately we published. Some of you may have seen him on the cover of our magazine right here. This is the October 2009 issue. And Rajiv went and interviewed him. And Rajiv, would you come up on the stage and share a little bit of your experience, please? Can he use that mic? You can use this mic. परम श्रद्धेय पीठाधीश्वर निम्बार्क संप्रदाय श्री जी महाराज, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। सद्गुरु बोधिनाथ आदरणीय स्वामी श्यामाचरण देवाचार्य जी महाराज, स्वामी परमाचार्य पलानीस्वामी जी महाराज, ब्रिज विहारी जी ब्रह्मचारी जी, परम श्रद्धेय श्री जी महाराज को आज सुनने के बाद अपनी बात को कहना बड़ा कठिन सा तब से मुझे लगा जब मैं इनके चरणों में सलेमाबाद गया था। संस्कृत के प्रकांड विद्वान, जिनकी सैकड़ों पुस्तकें भारत के न केवल स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही हैं, ये वो महाराज हैं। मुझे गौरव हुआ कि महाराज श्री ने ब्रह्मचारी जी के साथ मुझे इनका स्वास्थ्य तब भी मुझे बताया गया था कि ठीक नहीं था, लेकिन इनकी वाणी और इनका तेज जैसा आज है वैसा ही तब था, और आज भी आपने सुना। जो मैसेज निम्बार्क संप्रदाय का मुझे श्री जी महाराज और उनके साथ महाराज श्री से मिला, और हमारे आदरणीय परमाचार्य जी ने जो बात कही, क्योंकि फिलॉसफिकल बहुत बात कही जा चुकी है, तो मैं सिर्फ कवि की दो पंक्तियों में वो संदेश देना चाहता हूं जो आज दोनों
शैव और वैष्णव, जैसा कि परमाचार्य जी ने कहा कि मिला के जो बात है वो ये है कि आओ ऐसा भी कोई धर्म चलाया जाए। मेरे ख्याल निम्बार्क संप्रदाय से मिलने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि वो धर्म है कि आओ ऐसा भी कोई धर्म चलाया जाए कि जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। आओ ऐसा भी कोई धर्म चलाया जाए कि जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए और जिसकी खुशबू से महक उठे पड़ोसी का भी घर, फूल गुलशन में कोई ऐसा लगाया जाए। आओ ऐसा भी कोई धर्म चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। और महाराज श्री की प्रेरणा से ले चले इस रिश्ते को आपस में है उस ऊंचाई पे दोस्त कि तेरा आंसू मेरी पलकों से उठाया जाए। आओ ऐसा भी कोई धर्म चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। कितना अद्भुत अनुभव था जब मुझे खुद लगा कि मैं 5-6 हजार साल पहले पहुंच गया, जब मुझे उस पवित्र शालिग्राम के दर्शन हुए, जो आज नारद जी से दी हुई चीज बहुत कम लोगों को पता है। और महाराज श्री, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको जो वेदना है कि निम्बार्क संप्रदाय की इतनी ऊंचाई, इतनी बड़ी गहराई के बाद भी कम लोग इससे जुड़े हैं, मैं ये कहता हूं कि यहां बैठा हुआ एक एक व्यक्ति 1-1 लाख व्यक्ति के बराबर है। उसका रीजन है कि मैं जब इनके पास मुझे मौका मिला है आने का, एक बहन जी थी, वो तीसरी बार आई और कहने लगी महाराज मुझे दीक्षा दे दीजिए। मैं कहता हूं जो महाराज जी का लिटरेचर है सारी दुनिया में, ना केवल ये टेम्पल्स बना रहे हैं पर जो इनके क्वालिटी ऑफ लिटरेचर है वो भी अद्भुत है। इन्होंने उस बहन को, माता को कहा कि बेटा इसको पढ़ो और पहले ये समझो कि हमारे साथ जुड़ने में तुम्हें शाकाहारी होना पड़ेगा, लहसुन प्याज को त्यागना पड़ेगा, तुम्हारे घर में भी और जो मेंबर हैं वो भी इसके लिए राजी होने चाहिए, उनको भी लेके आओ। प्रभु जब इतनी पवित्रता, इतनी ऊंचाई आप अपने अनुयायियों में चाहते हैं तो वो अनुयायी तो 1-1 लाख के बराबर ही होगा। हिंदुइज्म टुडे मैगजीन ने महाराज श्री को जो हिंदू ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है, जैसा कि परमाचार्य जी ने कहा कि इनके कार्य को बहुत ही बारीकी से देखने के बाद वो अवार्ड इनको दिया गया विश्व स्तर पे। और इसका आपको अंदाजा इस बात से लग जाएगा, मैं कुछ चुनिंदा लोग जिनको ये अवार्ड मिल चुका है उनके नाम लेना चाहता हूं आपसे पहले। ये अवार्ड आपसे पहले मिला है स्वामी चिदानंद सरस्वती जी को, स्वामी चिन्मयानंद मुनि जी को, माता अमृतानंदा मई जी को, स्वामी सच्चिदानंद जी को, प्रमुख स्वामी महाराज अक्षरधाम सत्य साईं बाबा को, श्री चिन्मय को, स्वामी बुआ को, स्वामी चिदानंद सरस्वती ऑफ डिवाइन लाइफ सोसाइटी, मां योगा शक्ति, दादा वासवानी, स्वामी तेजोमयानंदा, रमेश भाई ओझा, श्री बाल गंगाधर स्वामी, स्वामी अवधेशानंद जी जूना अखाड़ा के। इस लेवल के महाराज जी आपके सामने हैं जिनको ये अवार्ड नवाजा गया, बख्शा गया। और अंत में 2 शब्द मैं अपने सदगुरु और अपने परमाचार्य जी जो कोआई से 32 सालों से हिंदुइज्म टुडे मैगजीन के आप सर्वे सर्वा हैं, और जैसा कि इन्होंने बताया कि बीबीसी या कोई भी अगर हिंदुइज्म को गलत तरीके से प्रेजेंट करता है
तो उसका विरोध या उसके बारे में स्पष्टीकरण देने में हमारे सदगुरु और हमारी टीम जो है वो सबसे आगे होती है। आपको आश्चर्य होगा कि यहां पर ये टैबलेट और लेटेस्ट पीसी का अवतार लेके बैठे परमाचार्य जी एक गुफा में रहते हैं और उस गुफा में लाइट नहीं है। क्या आप मान सकते हैं? लेकिन ये सच है कि ये जो वहां पे 22 या 24 स्वामी हैं, ये अपनी गुफाओं में रहते हैं। और वो गुफाएं, जैसे ये महाराज जी का इतना बड़ा प्रांगण है, 500 एकड़ का इनका वहां पर एरिया है, जिसमें शिव के मंदिर का निर्माण हो रहा है पिछले 3-4 दशकों से। तो ये अपने आप में एक बहुत विचित्र कहानी है। महाराज जी स्वयं वहां पे होके आए, अपने चरण डाल के आए। तो ये मैं आपके सामने श्री जी महाराज परम श्रद्धे और उनके द्वारा जो कार्य आगे हमारे स्वामी जी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से 108 टेम्पल्स का जो इनका टारगेट है परमाचार्य जी ने कहा है, और आप सबके सहयोग और आशीर्वाद के बिना ये कार्य जो इन्होंने चुना है वो संभव उसको करना है। और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपने सदगुरु, अपने परमाचार्य जी की तरफ से, जिनको आपने इतना सम्मान बख्शा। नमस्कार। अब हम फॉर्मली वो जो अवार्ड है, हिंदू ऑफ द ईयर अवार्ड, वो सदगुरु अपने परम श्रद्धेय स्वामी जी को देंगे। Gift we brought from Hawaii. In Hawaii, we planted in 1985, my guru planted Rudraksha forest that Swami has seen. And we have about 350 Rudraksha trees now and millions of seeds. But one of the trees out of the 350 gives a larger bead. So when we thought we would come to this wonderful birthday party, we went out to that one tree and we found seeds and cleaned them for our
Gopal Sharan Devacharya, and this is a gift from Kauai of Rudraksha beads. दिल्ली से परम श्रद्धेय श्री स्वामी राघवानंद जी महाराज का शुभागमन यहाँ होना था और आपका आशीर्वाद भी प्राप्त होना था, लेकिन वे अस्वस्थ हैं और हॉस्पिटलाइज्ड हैं, इसलिए नहीं आ पाए। तो यह कार्यक्रम आगे इसी प्रकार बांसुरी वादन के रूप में चलता रहेगा। और अभी आपने जैसे कि सुना, ईस्ट और वेस्ट का मिलन और साथ ही भगवान शिव और भगवान विष्णु का समन्वयात्मक पूजन, तो बहुत कम लोग, यहाँ तक कि जो बहुत उच्च श्रेणी के विद्वान हैं, वे भी हिंदुत्व को समझने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। उसका कारण यह है कि हिंदुत्व की इतनी विचारधाराएं हैं, वैदिक धर्म की इतनी विचारधाराएं हैं और इतनी सूक्ष्म विचारधाराएं हैं कि जब आप उसको समझना शुरू करते हैं तो जब तक समझ में आने लगता है तब तक संभवतया यह जीवन ही समाप्त हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ जिस प्रकार भगवान शिव का एक स्वरूप शिव और शक्ति के समन्वय का है, जिसको हम अर्धनारीश्वर बोलते हैं, इसी प्रकार हमारे यहाँ हरिहर की विचारधारा भी है, जिसमें आधा शरीर भगवान विष्णु का है और आधा शरीर भगवान शिव का है। एक तरफ लय और दूसरी तरफ स्थिति। तो ये हिंदुत्व की विचारधारा जो पूरे विश्व में फैल रही है, वो फैले बिना रहेगी नहीं। उसका कारण है कि सूर्य हमेशा पूर्व से ही उदित होता है और जो पूर्व से उदित होने वाला सूर्य है वो हमेशा अपनी रश्मियों को पूरे विश्व में निरपेक्ष भाव से फैलाता है। अब ये जो कार्यक्रम है, इसका अंतिम रूप, आप कोई भी उपासना करते हैं, कोई भी कार्यक्रम करते हैं, उसका प्रारंभ और उसका अंतिम स्वरूप हमारे यहाँ सुनिश्चित है। अंतिम स्वरूप है आरती के रूप में, अर्थात भगवान के प्रति, इष्ट के प्रति अपने आप को समर्पित करना। तो आरती होगी, आरती के बाद